All right, all right, all right. Here we go. I'm doing this live stream because I wouldn't want to sit and edit this whole thing again and again. So it should be relatively straightforward, fun, and easy. All right, one second. Okay, fair. Let's go. Hang on. Just a second. Right, here we go. How to age like a fine wine. Very interesting. This topic is going to be fun, but I'll keep the live chats open just in case we don't miss any. All right. Okay, I don't know how do I scale this. Give me a second. एक second दो भाई मुझे. मैं भूल जा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश का सीन. Scale, scale, fill. Thank you, thank you. Oh, good lord. Again. Bye. This is going to be a long chat. 1 घंटे का होने वाला है ये. एक आधे घंटे का. उसके बाद we'll do some live Q&A. मुझे 2 मिनट दो. मुझे ये. Okay, this is live. Fair. I'm just not able to figure out this one bit yet. To scale this and put it in place. Save, my good lord, save. Bam. Finally. Okay. All right. Let's go. Let's go. Welcome, welcome, welcome on board. This is how we are going to go about इस चैनल पे अभी गोइंग फॉरवर्ड कि भाई आराम से बैठेंगे अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे 1 घंटे का 40 मिनट का एक टॉपिक उठाएंगे कोई भी मेंस लाइफ से रिलेटेड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक इन डिटेल. आपके भी जो भी सवाल वगैरह हो वो भी अपन लाइव ले लेंगे. दैट शुड बी फन एंड दिस कुड मेक द होल थिंग a lot more intuitive is what I feel. Anyway, so the topic at hand today is I've seen in the like you've seen in the thumbnail, how to age like a fine wine and not like a potato. अभी recently यार कुछ कई दिन पहले मेरा 34th बर्थडे मनाया मैं 34 साल का हो गया अभी. और ये चैनल नहीं अपना जो इंग्लिश चैनल था we started that when I was around 26-25 years old. It's about 10 years. और कल इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव गया था तो एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत जन ने पूछा था कि मयंक हाउ डू यू स्टिल लुक द सेम टू व्हाट यू लुक्ड व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग यू इन 2019, 2020, 2018, so on and so forth. So I thought ki I'll sit and share the essentials that I have spoken about on this channel कि भाई 2018 से जो मैं बोल रहा हूँ 2017 से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब सीखो. क्योंकि ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता ना यार कि आप उसी समय बस अच्छा दिख रहे हो. दैट्स वन इंस्टेंट thing that you see from the grooming routine and the skincare. But the actual result or the actual benefit that your skincare and grooming has is long term, is what you see right now. When I'm 34 years old and I still don't look like a 34-year-old. अब इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं किसी 24-26 साल के लड़के जैसा दिखूं. That would be a bit too crazy in my opinion. There is a concept in biology called your biological age and your क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब आपका एक्चुअल उम्र क्या है भाई आपकी जिंदगी में. अगर आप 30 साल के हो तो अच्छे क्रोनोलॉजिकल एज. बायोलॉजिकल एज यूजेस योर मसल मास, योर स्किन टाइप, योर बॉडी फैट परसेंटेज एंड ऑल दीज थिंग्स टू टेल यू कि भाई आपकी उम्र होगी 30 साल लेकिन आपके शरीर की उम्र कितनी है. अगर आपके शरीर की उम्र आपके एक्चुअल उम्र से कम है देन यू आर इन द हेल्दी स्पॉट. Now, I have successfully managed
to pause my biological age at 30, ever since I was 30. So probably when I was 30, my biological age was 26. मैंने वो कभी check नहीं किया था, but of lately, whenever I have checked in the last 3 years, I have maintained my biological age in the age group of 30, 29 to 30. So that's the goal. आपको अपनी उम्र से 10 साल छोटा नहीं दिखना. फिर मतलब ही क्या हो गया आपके मेचोरिटी का, फिर मसल मास एंड ऑल दीज थिंग्स. बस गोल ये है कि आपको अपनी उम्र से, अगर आप मान लो 24 साल के हो, तो आपको 24 साल का दिखना है. आपको 24 साल का ही अट्रैक्टिव मेल वर्जन दिखना है, इवन व्हेन यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, राइट. अगर आप 28 साल के हो तो आपको 26-25 साल का दिखना है, कंसिस्टेंट अट्रैक्टिव वर्जन टिल द टाइम यू आर इन योर 30s. सो दैट्स द होल बिट ऑफ इट. जैसे आपने अपना प्राइम ग्रूमिंग एज रीच किया, you have to maintain that for as long as you can by practicing some healthy habits. That's the whole point. That's the whole साइंस बिहाइंड एजिंग लाइक अ फाइन वाइन. कि अगर आप 50 साल के भी हो तो आप बड़े हैंडसम से 50 साल के लौंडे हो, ना कि बुढ़े टाइप, पेट निकल गया एंड सर पे बाल नहीं, ऑल ऑफ इट. क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर माय एज, it's kind of depressing to see them honestly, because they have lost their whole fitness arc. हम सब साथ में खेलते थे यार, हम सब साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, बहुत कुछ करते थे. बट now when I see them, my flying school friends, my film school friends, my college friends, school friends, they look relatively very old, and they look probably 5-6 years older than their chronological age. That is not what I would want you to suffer from. Therefore आज का ये video. Okay, so let's get into the whole thing. जल्दी बोल बा अच्छा बा. Okay, comments. Here's what we are going to do with comments. We are going to get to the comments after I'm done with my whole tutorial. ठीक है, उसके बाद we'll sit and take your comments. We'll just answer your chats and things like that. अगर आपका कोई सवाल वगैरह है, then you can send them super chats. We'll take the exclusive सवाल and answer it in case we don't have any specific सवाल. So let's get into it. भाई क्यों दिखना हमें 10 साल young? Well, because that's the very healthy way to live life in terms of your grooming and skincare. Especially अगर आप mid 30s में या फिर 30-32 साल के एज में आ रहे हो. That's the whole point. अगर आप एक एक पील एक इंडियन मैन के लिए एक पीक मैस्कुलिन फिजिक और एक पीक मैस्कुलिन ग्रूमिंग 24 से 28 साल के बीच में होता है. मतलब दैट्स हाउ वी एज यूजुअली. उसके बाद शादी, स्ट्रेस वगैरह से लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, लोगों का बॉडी बिगड़ने लगता है, लोगों का स्किन केयर एंड ऑल ऑफ इट गोज फॉर अ टॉस. आई वुड वांट यू टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन टू मेंटेन दैट 24 से 28 साल का लुक, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओल्ड यू आर. अब अगर आप 20 साल के हो, then I'll want you to look like a 24-year-old, because that will be a whole lot more masculine and attractive. But that's for a different video. So the difference between the chronological age and biological age is what I told you. Our goal is to not look like our chronological age. Our goal is to look 4-5 years younger than our actual age. Now, the best way to probably explain this whole grooming hack is to make it a part of your lifestyle, to make it an essential part of your daily active routine. और इसकी शुरुआत होगी भाई आपके खान पान और आपके डाइट से, probably with water and hydration first, but with the food and the quality of food that you eat on a daily basis. अगर आपकी उम्र कम है तो भाई ये खाने से शायद आपको ज्यादा फर्क ना हो, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो, आपकी उम्र कम है तो आपके शरीर की कई सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फॉरगिविंग हो. Therefore it will be a hell of a lot more easier for you to eat whatever you would want and digest it and not let it show up on your face. But if you keep eating the junk, if you keep storing more and more visceral fat, if you keep not working on your overall fitness and health, it will catch up, and it will catch up in your late 20s to early 30s. Every friend of mine whosoever had a lifestyle problem of drinking, eating out and smoking, they look horrible because their skin has deteriorated, they lost their hair, their physique is all over the place, and thus they look probably a lot more older than what they should. So the very first thing, if you don't want to look like a much older version of yourself, is fixing the nuance of lifestyle routines. सोना, खाना,
पीना, और को हो सके तो as much as you can get it, make this and get this a part of your routine, make this a part of your routine, and probably build some discipline ताकि आपको 5 साल बाद you reap the benefits of it. But once when you have worked on your diet, because that's the thing that I have done. यार मैं बाहर का, I remember in my school days and all, I used to eat a lot. I used to eat out a lot actually, and that has probably ruined my skincare and all of it for a very, very long time. But since I got into fitness and weightlifting, I stopped eating out. I got very clean. अब पिछले 5 6 8 10 सालों में मैं बाहर का बहुत ही लिमिटेड बाहर खाया हूँ. मैं जब भी जाता भी हूँ तो आई एम वेरी स्पेसिफिक विद व्हाट आई ईट, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई ईट. मैं दिन के शायद एक ही, आई कैन ईट दैट सेम मील थ्राइस अ डे, आई कैन ईट दैट same meal 7 times a week and probably the whole 365 days of a year. I'm not telling you to be that extreme, but the more consistent you are with your nutrition, the more consistent you are with your food, and the more healthier options you choose in terms of your nutrition and food, the easier it will be for you to see the results going forward. Now, I am not a very youthful looking guy in that context. मेरे भी कुछ कई बाल white हुए हैं, मेरे भी कुछ कई skin wrinkly हुए हैं, but it is a hell of a lot better than the average 34-year-old man that you would see around. That's the whole point. हमें भाई मॉडल नहीं बनना, हमें एक्टर नहीं बनना, हमें वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेके कुछ और नहीं करना. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू प्रैक्टिस द बेस्ट लाइफस्टाइल choices we can, so that without using any synthetic stuff, we age properly and we look like how we should, even at this particular age. Because this opens a lot of opportunities. अगर आप मानो आप 32 साल के हो, अगर आप 26 25 साल के दिख रहे हो, then chances of you being a lot more friendlier with a 25-year-old guy becomes easier. Chances of you succeeding in the world of social dynamics become a hell of a lot more easier. And also chances of you wanting to mingle and be friends with somebody older and senior also becomes easier, because you have the intellect and you have the experience of it. So that's the beauty. Look young, but be mentally very mature and savvy. Then this would bring me to the most underrated aspect that I think is aging today's men a hell of a lot more than their diet and food. The external thing is probably the internal part of stress and the daily mundane lifestyle. क्योंकि आजकल के लौंडों को यार स्ट्रेस मैनेज करना आता नहीं. The only way they will probably handle their stress is by abusing their body or by getting quick fixes of nicotine, cocaine, substance of some shitty abusive substance. Caffeine, a lot of caffeine can also probably make you dehydrated and fuck up your skin over a period of time. A lot of nicotine, cocaine to chhodi do, a lot of nicotine and a lot of other micro substances you would see in these things, जो आपके mental health को थोड़े time के लिए आपको थोड़ा anxiety free करे, but it will fuck up your skin on a longer given period. So if you are not genetically gifted with youthful skin and youthful skin and youthful frame and body, then you have to not ruin it, or you don't have to speed up the process by having to fall for this shitty way of managing your stress and lifestyle. That's the reason यार मैं आजकल ध्यान और साधना का इतना बड़ा फैन क्यों बन गया हूँ. Why did I even get into it? क्योंकि यार 5 6 साल पहले तक मुझे कोई गधा भी बोले, मतलब भगवान भी आके बोल दे, मैं नहीं करता ध्यान मेडिटेशन. But of lately, whenever I got to know it, and since the time I started doing it, I have seen the benefits of it. I have seen the results of it, and I've noticed how significant your skin changes when you are meditating and actively doing things to de-stress yourself and be in a calm state of mind. Now, recently, one of my mentees, he went out to meditate in a proper meditation ashram for about 10 15 days. बहुत लंबा ध्यान था उसका, पर उसके लिए उसको 2 महीने का preparation करना था. And while he was at it, and when he came back from his meditation trip, he literally looked 4 years younger. वो 26 साल का है वो. जब गया 26 साल का था, जब आया 22 साल का लग रहा था वो बंदा, because that's how impactful and intenseful these things are, these practices are. So if you don't want some unhealthy practices to manage stress and anxiety, and you don't want to age a lot faster than you should, this is one very effective way to do it on a daily, regular basis. No nicotine, no caffeine, meditation, and actual real internal dopamine. Which will then bring me to the most obvious things that you'll have to do in case you would want to look and age like a normal masculine man. कि भाई आपका grooming routine.
Now, I haven't complicated my grooming routine in the last 2017. In the last 9 years, 2017 or 16 was the time when I actually started my group. 17 was the time when I actually started aggressively working on my grooming routine. And in the last 9 or 10 years, मेरा grooming routine same ही रहा है. Face wash, scrub, moisturizer, sunscreen, and probably this, the under eye cream. These 5 6 things have been consistent since the last 9 or 10 years, and that's the only thing you probably need to do as a man to age fine and take care of your skin. अब जब सुबह उठोगे अपना फेस वॉश करो, हफ्ते में 2 बार स्क्रब या मास्क लगाओ, घर से बाहर निकलने से पहले मॉइस्चराइजर, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इन सनस्क्रीन, एनी सनस्क्रीन बट एटलीस्ट SPF 50 वाले सनस्क्रीन. वंस यू आर बैक एट होम फ्रॉम योर वर्क या जो भी ट्रैवल कम्यूट, वापस से फेस वॉश, वापस से एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर, रात को कोई सनस्क्रीन की जरूरत नहीं बट एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर और अंडर आई क्रीम. दीज थिंग्स आर एसेंशियल फॉर योर स्किन to A, stay hydrated, and to remove the excess sebum or oil that many of our oily skin people might suffer from on a daily basis. That's the reason how you get acne, right? दो type के skin. Usually there are two types of skin and normal type of skin, oily skin and dry skin, and then there is a mixed skin जहाँ पे किसी के चेहरे पे शायद हॉट स्पॉट होंगे, यहाँ पे ड्राई होगा, यहाँ पे ऑयली होगा, एंड ऑल ऑफ इट. अब ऑयली स्किन अगर है तो आपके एक्नेस बहुत आएंगे. अगर एक्नेस आएंगे तो एक्ने स्कार्स छोड़ेंगे, एंड दैट विल ruin your face in the long term. अगर ड्राई स्किन है तो भाई रिंकल्स बहुत जल्दी आएंगे, which will ruin your face in the long term. So what we have to do here is we have to A, reduce the oil from our oily face if we have a lot of sebum happening in our face, and two, if our skin is relatively very dry, then we need to use a moisturizer that will keep our face hydrated. हमें ना तो बहुत ड्राई स्पॉट्स चाहिए, ना ही ऑयली पैचेस चाहिए, हमें ना एक्नेस चाहिए, ना ही स्कार टिश्यूज चाहिए. So that's the reason you need a good face wash. Depending on your skin type, you'll have to find the face wash. अगर आपके स्किन में acnes वगैरह ज़्यादा आते हैं, you will need a face wash with salicylic acid, and you will even probably need a moisturizer with a salicylic acid. अब बहुत जन सीरम यूज़ करते हैं, बहुत जन बहुत कुछ यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता. मैंने ट्राई किया था बट इट जस्ट मेड माई ग्रूमिंग रूटीन अ हेल ऑफ अ लॉट लॉन्ग. मुझे सुबह उठ के आधा घंटे का स्किन केयर रूटीन नहीं करना भाई, मुझे बस 5 मिनट ही करना है, एंड मुझे 5 मिनट लेकिन हर दिन करना है. That's the way I would want to make something a part of my life. The same with gym, the same with everything. अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो फिर कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो जाती है. आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने ग्रूमिंग रूटीन पे, उसको हाई फाई या 10 चीजें करके इंटेंस नहीं करना, बिकॉज दैट जस्ट नॉट रिपीटेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अभी शायद आपके पास टाइम है, कॉलेज में हो या फ्री हो तो यू कैन डू इट, बट नॉट व्हेन यू आर वर्किंग और नॉट व्हेन यू हैव अ लाइफ हैपनिंग otherwise. So 5 essential things you have to get in your grooming routine. Face wash, scrub which you will do once or twice a week. हर दिन नहीं करना स्क्रब, 1 या 2 बार हफ्ते में. बट फेस वॉश और स्क्रब के बाद होगा आपका मॉइस्चराइजर, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, ऑयली, मिक्स या फिर ड्राई, एंड देन यू विल पुट द सनस्क्रीन बिफोर यू लीव द हाउस. जब घर आओगे, मे बी कैरी द सनस्क्रीन ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू बी आउट फॉर द होल डे. एवरी 3 4 घंटे में यू कैन पुट इट ऑन योर फेस. वंस यू आर बैक होम, यू कैन वॉश योर फेस अगेन. इवन इफ यू डोंट गो आउट, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, शाम को वापस से जिम के बाद या वॉक के बाद wash your face, put on the moisturizer, put on the under eye cream, go off to sleep. Under eye cream, moisturizer, face wash, scrub, that's it. That's the only 4 things that you would probably, and obviously sunscreen. 5 things that you would need in your daily grooming routine ka arsenal. That's the external part that will probably take care of the superficial layers in case अगर आपका अंदर का सब कुछ सही है तो. But your skincare actually starts in your gut. Your skincare is actually the result of what you eat. Your skin is the absolute result of what is in your stomach. और जो भी आप खाते हो दिन में वो आपके शक्ल में दिखने लगेगा. अगर आप पानी नहीं पियोगे आपको ड्राई स्किन होगा, अगर आप बहुत ऑयली खाओगे आपके स्किन में एक्नेस होंगे, पिंपल आएगा. सो यू हैव टू क्लीन अप योर डाइट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, अगर आपका डाइट साफ हो गया, अगर आपने वो एलर्जन भरी प्रोसेस चीज़ें खानी बंद कर दी, स्पेशली the quality of Indian fast food, which is absolute shit. If you stop eating highly processed food, and if you start hydrating yourself, if you start taking care of your allergens in the food. बहुत जन को भाई बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होता है, किसी को रोटी से एलर्जी होती है, बट वो फिर भी खाते बैठते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इस बात से एलर्जी है कि नहीं.
ट्राई टेकिंग इट आउट फ्रॉम योर डाइट एंड चेक, क्या मुझे अंडा खाने से या दूध पीने से पिंपल आ रहा है? देन चांसेस आर आपका गट अंडा और दूध सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, एंड इफ यू कीप डूइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल कीप गेटिंग एक्नेस एंड इट विल ruin your face in the long run. I have done it. I used to abuse the whey protein with milk, and therefore I have a fair share of acne marks, as you can see. So learn from my mistakes. One second. Oh boy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. और क्या? सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया मैं आपके लाइव चैट पढ़ने के चक्कर में, बट कोई नहीं, वी गॉट दिस, वी गॉट दिस. बिकॉज दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. अधिकतर लड़के जब भी स्किन केयर की बात करेंगे, मैं देखूंगा यूट्यूब पे या कोई भी, एक में तो बेचारे 25-26 साल के, उनकी उम्र हुई नहीं है, उन्होंने अभी अभी शुरू किया अपना स्किन केयर या फिर अपना ग्रूमिंग रूटीन. उनको लगता है कि भाई चेहरे पे फेस वॉश लगा लिया, स्क्रब लगा लिया, तो बस यही इसी से बन जाएगी मेरी हैंडसम सी शक्ल. That is just one superficial way. That is just one external way. And of course, you have to be consistent at that too. But all of it is going to be useless अगर आपका खाना और पानी on point नहीं है तो, अगर आपकी नींद और अगर आपका रेस्ट एंड रिकवरी on point नहीं है तो. Which then brings me to another underrated thing that you may have experienced अगर आप इस चैनल के लंबे टाइम से सब्सक्राइबर हो तो, कि भाई आपका फिटनेस, आपका बॉडी फैट परसेंटेज और आपका मसल मास, जितना ज्यादा लीन मसल रहेगा आपके शरीर में, द मोर मसल यू गेट वर्किंग आउट. ऐसे घर बैठे लीन मसल नहीं बनता, कुछ वॉकिंग करने से भी लीन मसल नहीं बनता. लीन मसल बनाने के लिए आपको जिम जाके वेट ट्रेनिंग करनी होगी. दैट्स द ओनली वे टू बिल्ड लीन मसल. देयर इज नो वे ऑन अर्थ you can do anything else and build lean muscle. And nothing on this planet earth can make you more younger, muscular, attractive than having lean muscle all over your body, including your face. So the more muscle you gain, the more fat you lose, even from the face and the neck and all those areas, the more younger and the more attractive and more handsome you will look for a long period of time. तो भाई जिम जाने का बस एक ही फायदा नहीं है कि आपकी बॉडी बनेगी, बाइसेप बनेगा, आप 200 किलो का डेडलिफ्ट उठाओगे. दैट्स वन वेरी गुड थिंग. यू विल probably be active and physical all your life. We can talk about it in a different stream. बट वन ऑफ द वेरी इसेंशियल थिंग्स जो आप बहुत जल्द देख सकते हो जिम जाके, कि भाई आपकी शक्ल बदलने लगती है. अगर आप बहुत पतले हो तो आपके शक्ल में थोड़ा वेट आने लगता है. अगर आप बहुत मोटे हो तो आपका शक्ल थोड़ा चिसल्ड, थोड़ा जॉ लाइन वगैरह थोड़ा रिप्ट होने लगता है, कि भाई अचानक से मेरे शक्ल को क्या हो गया. बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज स्टार्टेड टू लूज द फैट, it has started to use water and hydration the proper way, and the lean muscle that it is gaining, the lean muscle, it will just not gaining on your arms and your abs and your chest. The lean muscle is getting developed everywhere, and that, my friend, makes everything look a hell of a lot more fresh, attractive, tight, and young, as it should in today's modern man. So don't treat fitness just like a fitness. weight training का बस आपके बाइसेप और आपके चेस्ट से ही फर्क नहीं पड़ता. वेट ट्रेनिंग ऑल्सो शोज अप ऑन योर फेस. अभी आप देखोगे बहुत जन है जो ऑफ लेट 29, 30 या इवन 40s में अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना चाहते हैं, या फिर शुरू करते हैं रादर. उनकी बॉडी तो शायद उतनी कमाल नहीं बनेगी, मतलब कंपैरेटिवली इफ somebody starting working out at 40, he'll probably take 8-10 years with a lot of steroids and shit to build the body, but he'll notice a significant change in his face very quickly. अगर आपकी उम्र 30 साल भी है, आपको बहुत ही इफेक्टिव चेंज दिखेगा आपके शक्ल में the moment you start weight training. That's the very essential, that's one of the other beauties that I have noticed over the years, that weight training hasn't just made me feel more confident, be more muscular and strong, but has also maintained my face the very same as it could over the course of last 10 years. So yeah, that's the essence of it. Because the number one anti-aging hack that I could share or I could tell you to focus on is protein and muscle. ये देश anyway protein deficit देश है. हमारे देश में anyway लोग प्रोटीन खाते कम है या प्रोटीन को इंपॉर्टेंट कम समझते हैं. वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर के अलावा भाई कोई नहीं खा रहा है इस देश में अभी प्रोटीन. मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, मैं अपने भाई बंधु को देखता हूँ, कोई नहीं खाता प्रोटीन. जो खाता है वो भी किसी हिसाब से प्रोसेस्ड ही खा रहा है. जो भी खा रहा है बाहर का ही खा रहा है, घर का कोई प्रोटीन नहीं खा रहा, घर का कोई प्रोटीन बना भी नहीं रहा. So that has to change. The carb savvy country that we are, थोड़ा सा carb savviness should go down and we have to start inculcating more protein
and with protein we have to start lifting goddamn weights. अगर जिम नहीं जाना घर पे शुरू करो, but you have to start lifting weights. You have to start building muscle. You have to start putting on lean muscle, and the only way to do it is resistance fucking training. That's the very essence of it. But long story short, gentlemen, खेल यही है कि यार एंटी एजिंग या एजिंग लाइक अ फाइन वाइन इज अ लाइफस्टाइल, इट इज नॉट अ हैक. क्योंकि मैं 10 साल 8 साल 15 साल की बात कर रहा हूँ, मैं शायद ये वीडियो वापस बनाऊं 2 साल बाद या नेक्स्ट ईयर या व्हेन आई एम 40. द होल गोल वुड बी कि भाई मैं आज अपने रूटीन के साथ कितना कंसिस्टेंट हूँ, मैं आज भी क्या वही चीज कर रहा हूँ जो मैं पिछले 6-8 साल से करते आया हूँ. द मोर कंसिस्टेंट आई स्टे, द मोर ऑनेस्ट आई एम विथ माई रूटीन्स, द मोर loyal I am to my skincare practices, to my diet, to my nutrition, to my hydration, the better it will be for me to look ahead in the future and then be proud of the version that I look like in the coming days. So make it a part of your lifestyle. Don't try to shortcut your way into it. अभी अगर आपने कोई आदत बना ली है 22-23-24 साल में, अभी तो आप अच्छे दिखोगे ही, there is no doubt to it. But in the long term, this will only make things so much more attractive. One of the other, one of the most important, or how do I say, one of the most depressing thing that men suffer from of late in their 20s or early in their 30s is the hair, the fuck up of their hair, the way they start thinning their hair, lose their hair. पहले ये सिर्फ लड़कियों में हो रहा था, आजकल लड़कों में भी होने लग गया, एंड दे आर गोइंग बॉल्ड, प्रीमेच्योर बॉल्डिंग या प्रीमेच्योर ग्रेइंग बहुत हो रहा है आजकल. कुछ के लड़कों को मैं देखता हूँ बेचारे 25-26 साल के, उनका पूरा साइड का बाल व्हाइट हो गया और ग्रे हो गया, जो भी हो गया. 27-28 साल के लड़के को बॉल्ड पैच आ रहा है, ऑल ऑफ इट. सो दीज थिंग्स शुडंट बी हैपनिंग एट दैट एज. कुछ तो हो रहा है आपके लाइफ में जो आप चाह के भी इग्नोर कर रहे हो, विच इज speeding up your biological age than it should be. It is speeding up your chronological, it is slowing down your chronological age as it should be. That is not a healthy way to solve this problem. क्योंकि आज अगर आपका बाल वाइट हो रहा है, अगर आपको बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि बहुत कुछ अंदर आपके सिस्टम में इज एजिंग अ लॉट फास्टर देन इट शुड. These are just superficial signs. There is a lot happening internally which you can't even see because you are just not aware and you are ignoring it right now because you are too bloody young. So please don't ignore it. If you see some spots, if you see some patches, if you see some graying or thinning of hair, think what are the changes you can make, what are the nasty options of life that you are living right now, और कुछ उन चीज़ों को कितनी जल्दी से निकाल सकते हो आप अपने लाइफ में से. वो हो सकता है अननेसेसरी स्ट्रेस, वो हो सकता है आपका लाइफ फूड ईटिंग हैबिट्स, आपका सोने का तरीका, अ लॉट ऑफ थिंग्स. सम पार्ट ऑफ इट इज जेनेटिकल, आई गेट इट कि भाई मेरे पापा के भी बाल नहीं थे मयंक, तो मेरे बाल कहाँ से रहेंगे. यार आपके पापा के बाल 40 साल में नहीं थे, 25 साल में तो थे ना. लाइक ठीक है, अगर आपके पापा के बाल 25 साल में भी नहीं थे, दैट्स अ डिफरेंट टॉक. But if your father had hair till he was 45-50 years old and your granddad started balding at 65-70, why the fuck are you balding at 25? Or why are you getting gray hair at 30? Right? You have to have these questions and you have to honestly see कि भाई ऐसा क्या हो गया. Okay, lifestyle has changed. We are under a lot of stress. But so are the solutions. There are plenty tools available for you to not be stressful, for you to be fit, for you to be healthy, and for you to look and be your most handsome self. Don't let the excuses fuck you over otherwise. Your options, your lifestyle. Please live it and choose the wiser options. Do not age like a potato, but age like a fine wine. Now, let's do the Q&A. All right. Okay, let's go. Oh boy. Subjyoti has sent 3 super chats. We'll start with that. Good morning, good morning. Evening. Good evening, sir. How do you? Okay. Here's what I'm going to do. I'm going to put the super chats here so that you all can read it too. But show. Not here. Hide this. Jesus, I don't even know how do I show this thing here, but okay. Anyway, you all can see it. How do you stay consistent with your mantra of eating homemade and not eating outside food for years? Because I don't. Once you fall
see, there are two ways to probably get disciplined in life. एक होता है कि भाई आप में बुद्धि आ गया, दिमाग आ गया, ज्ञान आ गया, मैच्योरिटी आ गई, आपको पता चल गया कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे शरीर के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है। दूसरा होगा कि जब आपका शरीर बहुत ही बेकार स्थिति में आएगा, when you fall really very sick and when doctor tells you कि now you can't, नहीं तो you will probably be suffering seriously, that time you'll probably stop eating. So if you want to wait for that extreme end, you can. Rather, if you want to grow your intellect, have some maturity and be like, okay, I think I'm doing it extreme and I wouldn't want to abuse my system so much. So maybe I'll not just stop eating outside all by its own एक ही दिन में. I'll start reducing the intensity of it. अगर मैं हर दिन बाहर खाता हूँ तो मैं शायद हफ्ते में एक दिन खाऊंगा. अगर मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन खाता हूँ तो मैं महीने में 2 दिन खाऊंगा. अगर मैं महीने में 2 दिन खाता हूँ तो महीने में एक दिन खाऊंगा. The intensity has to go down gradually. एक दिन में किसी का addiction नहीं छूटता. It takes time. So be kind and stay consistent with it. I dress well and get mistaken for the boss. How should I handle my actual boss's frustration and the overall situation? Don't have to. Why would you? If your boss is frustrated by your demeanor, then that's his insecurity. What you can do is you can be with your boss and you can be a good subordinate to your boss. You can help him out, you can talk to him, you can hype him up, you can praise him. Like if the guys in the room look at your style and fashion and think you are the best dressed man, then your job is to probably make the actual boss in the room also feel like a worthy man, because you'll have to be the leader here because the people around you wants you to lead. So don't make him feel not like a leader. Hype him up, tell him nice things, make him a part of the group, and he'll not be frustrated. He'll be like, all right, fair enough. That's how it is. What is the current topic update on geopolitics? Oh, that's a different. Oh, main channel, not here. और क्या? और कुछ? यार मेरी हाइट 5'5" है, सारा कॉन्फिडेंस गया है भाई. 5'5" है तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स. टॉम क्रूज 5'6" का है, 5 फुट का है, उसके कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you let your height, your hair, your beard, your anything which is not in your control define your confidence, then it will be a very hard time for you to be confident. Control the controllables. Don't try to focus on things you can't control. That's just a very dumb way to find confidence or live life. अगर आपकी हाइट आपके हाथ में नहीं है तो आप क्या करोगे? घुटने तोड़ के चेंज बढ़ाओगे? That's dumb. Get into your best physical shape you can, groom yourself the best way you can, dress the best way you can, and you'll become a very attractive, very charismatic 5'5" that people won't even notice. Become that guy. Don't become a sore loser who's crying about being 5'5" all the time. All right. Anything else? Cool. Let's go. That's it. I joined right now. Can you share the skincare routine and tell the exact product? My age is 29. You have to watch the video. Rewind karo. Ye video ke nahi jaane wala. This will stay. I have said the routine. There are 5 products, the time, and how often would you use it. Talked about it all. You can watch it and learn from it. I'll not delete the video. It will just stay. What do you eat in a day? I eat very basic regular meals. I'll probably do a live stream or a micro vlog on Instagram and share what I eat. That's it. Cool. Fair enough. I think that concludes the chat. That concludes the video. I'll let the video stay online so that you all can watch it later and probably edit some parts out of it so that it's easier for you to consume and learn from. I hope this live stream was fun. I'll figure this other things out soon on how to have the chats and all of it here. But yeah, thank you so much for joining in. It was fun. And in case you would want me to pick another topic next time, what is the topic you would want me to do? Let me know in the comment section and I'll make it happen. I'll sit with you, talk with you, and probably take your Q&As and answer the questions. Anyway, before I head out, here is a quick update. Basics signature polos are live at tvbasics.com. We even have a few of these linen shirts left. Royal blue and black and white, I guess. Size check कर लेना tvbasics.com पे.
इन दोनों पे अभी शायद 2 दिन और है ऑफर का, बाई वन गेट वन. सो इफ यू बाई वन यू विल गेट द अदर वन फॉर फ्री. बट दिस थिंग एंड्स, आई थिंक 8 February इज द लास्ट डेट. आई हैव टू चेक. 2 दिन के लिए है. जाओ teambasics.com पे एंड गेट इट इन केस यू हैवंट येट. ठीक है, चलो मिलता हूँ अगले में. जय हिंद, टेक केयर, बाय. आई होप यू हैड गुड टाइम.